বাক্সাৰ হুৱনখাটাত বন্য হস্তীৰ সন্ত্ৰাস ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰে বৃহৎ হস্তীৰ জাকে। ৰাজ্যত দুদিনৰ পৰা নেৰানেপেৰা বৰষুণ দি থকাৰ সমান্তৰালভাৱে বাক্সা জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বন্য হস্তীৰ জাকে সন্ত্ৰাস সৃষ্টি কৰিছে। নিশা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ মাজতে হাতীৰ জাকে ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰিছে বাক্সাৰ হুৱনখাটাত। হাতীৰ আক্ৰমণত নিজৰ প্ৰজাতি হেৰুৱাই উৰেটো নিশা বৰষুণত তিতিবুৰিয়ে পাৰ কৰি দিশহাৰা হৈছে উৎপল সূত্ৰধৰ নামৰ ব্যক্তিগৰাকী। উল্লেখ্য যে জিলাখনৰ হুৱনখাটা অঞ্চলত নিশা বনৰীয়া হাতীৰ এটা জাকে প্ৰৱেশ কৰি কেইবাটাও পৰিয়ালৰ ঘৰ দুৱাৰ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰাৰ লগতে দুটা ভাগত বিভক্ত হোৱা জাকটোৱে ধানৰ কঠীয়া, তামোল, নাৰিকল, কল আদি খাই তহিলং কৰে। এফালে নেৰানেপেৰা বৰষুণ, আনফালে বনৰীয়া হাতীৰ সন্ত্ৰাসে বৰ্তমান অঞ্চলটোৰ ৰাইজক আতংকিত কৰাৰ লগতে উজাগৰি নিশা পাৰ কৰিবলৈ বাধ্য কৰি তুলিছে। हाम्रो यो सुबनखाटा भिसिडिसीको अन्तर्गत सुबनखाटा मिलन 1 नम्बर मिलन गाउँ हो। यहाँ 12 बजीदेखि लगभग 2 बजीसम्म जङ्गली हात्ती आएका थिए। दक्षिणबाट 2 भागबाट पसेका थिए। एक भाग आएर पसेर चाडा हात्तीले चाहिँ यहाँ समाजको ढिकोटिको धान खाए। अरू यता खोलाको किनारे माझ माने खेतको माझबाट आएर यहाँ मेरो म जहाँ छु यहाँ सबै भेला भएर यो अब धानको बिउ रोप्न बेला भएको बिउ खाए। यता मेरो भाइको बगान नष्ट गरिदिए। तामुल बगान 150 वटा जति फलेकै तामुल, अरू फुल बिरुवा, अहिले मेरै पनि साना साना बिरुवा नष्ट गरे, नरिवल खाइदिए। त्यस्तै अब निकै नै अनिष्ट भयो र अब त्यो क्षतिपूरण त अब हामी पुरा अब पाउन असमर्थ छौँ। अब त्यो फल्न थालेको तामुल त्यत्रो बनाउन निकै अब फेरि कष्ट हुन्छ र अब के भन्नु, अब अघिदेखि नै आइराख्ने हो। तर अब वन विभागले अलिकति हेरविचार गरिदिएको थियो भने यतिसम्म हुने थिएन कि। अब कसैले पनि अब हात्ती आएको थाहा नै दिँदैनन् आजभोलि। हिजो त अब अघिपछि बमा फुटाउँथे, हिजो त बमा पनि कसैले फुटाएनन्। फेरि माथि अब पानी पनि परेको थियो, त्यसले गर्दा खेद्न पनि हामी असमर्थ नै भयौँ। हात्ती लगभग 25-30 वटा जति थिए अनुमानमा। अब आँखाले चाहिँ पुरा देख्न पाइएन, अब पानी परेको थियो, घरबाट निक्लिन पाइएन। 25-30 वटाको अनुमान गर्यो। जति अब यहाँ क्षति भयो, जति अब पाइला छन्। अब मेरो अब यहाँ बिउबारी नै नष्ट भयो। यहाँ अब देखाइराखेको छ टेके उतापट्टि नयाँ बियाड अब टेकेको छ। यहाँ पुरानो रोप्ने बेला भएको धान अब बिउ टेकेको छ। अब यत्रो बिउ पार्न त मैले अब कहिले पार्नु, अब समय पनि छैन। र सरकारको तर्फबाट केही अब फरेस्ट डिपार्टमेन्टबाट केही अब सहायता पाए त हुने थियो, अब दिने हुन् कि होइनन्। यहाँ दक्षिणदेखि यहाँ पारी खोला पारी या नयाँपाडा गाउँको लेखबहादुर सुवेडीको घर भत्कायो भनेर सुन्यौँ। त्यहाँबाट खेदाएपछि यहाँ दक्षिण 2 नम्बर मिलन भन्छ, त्यहाँ पसेर तेजकुमार लिम्बूको बारीमा पसेछन्। त्यहाँ बगान यस्तै पुली थिए, पुली भाँचेछन्।